and welcome, my dear friends. Today, the topic is about defects or imperfection in crystals. What is this all about? We'll be talking about this from short while. By then, if you are new to my channel, please do subscribe and share it. So now, what are defects? Defects are basically any deviation from the ordered arrangement of in a crystal. We call that a defect, or we can say a disorder, defect or disorder, or we can say an imperfection. एक क्रिस्टल में किसी भी तरीके का डिसऑर्डर होना, we call that a defect, imperfection or disorder in that crystal. You know, at 0 Kelvin temperature, crystals are actually perfectly ordered. Crystals are perfectly ordered, which is also true because their entropy is approaching 0, that's equal to 0 at that time as per third law of thermodynamics. So at 0 Kelvin, crystals are perfectly ordered, and because of that, the entropy is 0. So as the temperature is increased, so as T is increasing, what happens? There occurs disorder in the crystal. Disorder in crystal that leads to a defect. So that's why these defects are also called as thermodynamic defects, because they are created by means of raising temperature. So at 0 Kelvin temperature, crystals are normally perfectly ordered, which is having a 0 value of entropy. But as the temperature is increased, there occurs disorderness in that crystal and entropy gets raised. So we call this a defect. And since it's being developed by means of raising temperature, so we call it as a thermodynamic defect. So it's a thermodynamic defect. Now, how many number of defects are there in a crystal is given by, so n is equal to n e raised power minus e divided by 2RT. This gives the number of defects. This equation gives you the number of defects in a crystal. So this is the number of defects, and this is basically the number of latticytes per centimeter cube of crystal. E is actually the energy required to create a defect, and T is absolute temperature. So if you raise the temperature, number of defects will increase because this is the negative value. Denominator जितना बड़ा होगा उतना इसका value जो है वो कम पड़ेगा. So number of defects will increase. If the energy required to create defect is very large, then the number of defects will be lesser. So this is the expression which makes us understand that how many defects can occur in a crystal, and that depends on the number of latticytes per centimeter cube of that crystal. It depends upon the energy required to create that defect. It also depends on the temperature, the absolute temperature, which is used to create the defect. Now, ये जो defects हैं ये दो तरीके के हैं. So these defects are basically of two types. Defects are of two types. Number A is point defect, and number B is align defect.
So we have a point defect and we have a line defect. Point defect is basically a defect, or we can say irregularity or deviation जो हुई है around an atom. Irregularity or deviation around an atom, जब एक एटम के इर्द गिर्द deviation होगा या irregularity होगा, so we call that point defect. This is the irregularity, or we can say deviation around a line. Around a line, which means row of atoms. For example, अगर आप यहाँ देखेंगे, so we have, for instance, particle here. We have particles here. You can see these particles, they are perfectly ordered. Now, once it's before defect, once you create a defect, so you are having this kind of picture. If you can see that this is the particle over here that's missing, that is not present here. So this is the particle which is missing over here. So this kind of deviation which occurs around an atom is basically called as a point defect. So this is a point defect. Now, अगर आप इसमें देखेंगे, suppose we have particle over here and they are in ordered fashion. They are placed in ordered fashion. So it's a perfect crystal. This is before defect. लेकिन जब आप इसमें डिफेक्ट कराते हैं तो if it goes like this, if you can see, ये जो यहाँ पे लाइन है, this is the row of atoms. ये जो रो ऑफ एटम्स, ये वाला रो ऑफ एटम्स जो है, ये थोड़ा सा डिवेट हुआ है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पिक्चर. इट हैज डिवेटेड स्लाइटली दिस ऑन द लेफ्ट. ये ऐसे हुआ है. सो जो डिवेशन हुआ है ऑन दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, या अगर राइट साइड भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ लेफ्ट साइड में दिखाया. तो दिस इज बेसिकली द डिफेक्ट क्रिएटेड अराउंड अ लाइन और रो ऑफ एटम्स. This is called as line defect or irregularity around a line. I hope you understand it. Now, we shall not extend our discussion to line defect, but we will stick to point defects. ये जो point defects होते हैं, मतलब irregularity जो होती है या deviation जो होती है around an atom, ये जो point defects है, this can be either stoichiometric, this can be the non-stoichiometric or impurity defect. So we can say here, point defects can be either number A, stoichiometric defect, they can be number B, non-stoichiometric, defect, or we can say number C, impurity defect. We'll be talking about these two later on. So we'll start our discussion with stoichiometric defect. So stoichiometric defect वो वाला point defect होता है, वो वाला point defect in which cation anion जो ratio है, that is same before and after defect. Before and after defect मतलब अगर A B आपका आयनिक कंपाउंड है, उसका रेशो है 1:1, दिस इज बिफोर डिफेक्ट. आफ्टर डिफेक्ट अगर इसमें डिफेक्ट करते हैं आप, तो इसका रेशो फिर भी बनता है 1:1. मतलब आफ्टर डिफेक्ट B, रेशो ऑफ कैटाइन और एनाइन, you take basically A here as cation and B here as anion. So
एनाइन और कैटाइन के दरमियान जो रेशो है बिफोर डिफेक्ट दैट वाज 1:1. नाउ आफ्टर द डिफेक्ट इज क्रिएटेड द रेशो इज अगेन 1:1. सच अ डिफेक्ट इज नोन एज stoichiometric defect. So stoichiometric defect is basically a point defect wherein the ratio of cation and anion before and after the defect is created is same. It's called a stoichiometric defects. This defect is of two types. Now stoichiometric defect जो है it's of two types. Stoichiometric defect के दो types है. विज नंबर ए हमारे पास है शॉटकी डिफेक्ट एंड नंबर बी हमारे पास है फ्रैंकल डिफेक्ट. शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज शॉटकी डिफेक्ट? शॉटकी डिफेक्ट इज अगर इक्वल नंबर मिसिंग है, सो इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन इज मिसिंग, is missing from lattice sites. जब इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन्स एंड एनाइन्स मिसिंग हो गए लैटिस साइट से, सो व्हाट वी से इज द डिफेक्ट इज शॉटकी डिफेक्ट. फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास ये कैटाइन है, ये एनाइन है, दिस इज कैटाइन, दिस इज एनाइन, सो वी हैव एनाइन कैटाइन, एनाइन कैटाइन, कैटाइन एनाइन, कैटाइन एनाइन. सो दिस इज द आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल. तो दिस इज बिफोर डिफेक्ट. लेकिन जब आप इसमें शॉटकी डिफेक्ट कराते हैं तो व्हाट हैपेंड? इट्स प्लस, इट्स माइनस, इट्स प्लस, देन इट्स अगेन माइनस, प्लस माइनस प्लस, देन दिस इज अगेन हियर प्लस माइनस माइनस. मतलब ये कि अगर आप देखेंगे यहां पे, इफ यू सी दिस, दिस इज द एनाइन विच इज मिसिंग ओवर हियर एंड दिस इज द कैटाइन which is missing over here. मतलब ये कि एक कैटाइन और एक एनाइन मिसिंग है, सो इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन्स एंड एनाइन्स इफ दे आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइट्स, द डिफेक्ट इज क्रिएटेड एज द डिफेक्ट क्रिएटेड वी कॉल एज शॉटकी डिफेक्ट. अब अगर बात करते हैं फ्रैंकल की, नो इन फ्रैंकल व्हाट हैपेंड? इट्स आल्सो कॉल्ड एज डिसलोकेशन डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. It's also called as dislocation or interstitial defect. So इसमें क्या होता है? एक कैटाइन जो होता है, कैटाइन that is missing, कैटाइन is missing from lattice site and occupies the interstitial site. और we can say void. मतलब ये कि कैटाइन आपका डिस्प्लेस हुआ है, मतलब ये कि कैटाइन जो है that has been displaced to void. कैटाइन आपका लैटिस साइड से डिस्प्लेस हुआ है और it occupies the interstitial site or we can say void. For instance अगर आप यहां पे देखेंगे, let me show it by means of red color. So आपके पास है ये प्लस माइनस प्लस माइनस, and there is minus plus minus plus, and this is here plus, this is minus, this is plus, this is minus. This is the ideal crystal without defect. This is before defect. अब जब आप डिफेक्ट क्रिएट करते हैं तो इट्स प्लस माइनस and it's here minus, it's here minus, it's here plus, it's here plus minus plus minus. ये जो आपका ये वाला कैटाइन है it occupies the place here. मतलब ये कि ये डिस्प्लेस हुआ है. अगर आप देखेंगे this is the cation which was present at lattice site, it's now displaced to void and these are here voids. It has occupied the void. ये जो lattice site है यहाँ पे है ही नहीं है, it's not here, it has been moved into the interstitial site or we can say void. The displacement of a cation into the interstitial site or void we call it Frenkel defect. So this is called as Frenkel defect. अगर आप देखेंगे शॉटकी डिफेक्ट में जब आयन्स मिसिंग हो गए तो डेंसिटी डिक्रीज हो गई, सीधी सी बात है, बिकॉज मास डिक्रीज हुआ है. सो वी कैन राइट हियर इन शॉटकी डिफेक्ट, यहाँ पे लिखते हैं हम Frenkel डिफेक्ट. तो शॉटकी डिफेक्ट में बात यह है कि इसमें डेंसिटी जो है, डेंसिटी वो डिक्रीज हुई है, दैट हैज बीन डिक्रीज्ड. लेकिन इसमें जो डेंसिटी है दैट रिमेन सेम बिकॉज द
डेंसिटी इसमें डिक्रीज क्यों हुई? सिंस मास डिक्रीजेस। इसमें तो कोई एटम मिसिंग है ही नहीं। देयर इज नो एटम, देयर इज नो कैटाइन और एनाइन विच इज मिसिंग, रादर इट्स ओनली डिस्प्लेसमेंट, इट हैज गॉन डिस्प्लेसड, इट हैज गॉन डिस्प्लेसड। तो डेंसिटी जो है वो सेम रही, इट्स सेम। अब कंडक्टिविटी इसमें भी राइज हो गई ड्यू टू आयन मूवमेंट। कैसे? जब यहां पे आयन्स है ही नहीं, देयर आर द वैकेंसीज, दीज आयन्स जो है दे कैन मूव फ्रॉम देयर लैटिस साइड्स इन टू ऑक्यूपाई दिस साइड। सो वंस दे विल मूव, सो आयन मूवमेंट की वजह से जो है कंडक्टिविटी राइज हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी लैटिस साइड पे वैकेंसी क्रिएट हो गई, इसमें भी आयन मूवमेंट हो सकती है जिसकी वजह से कंडक्टिविटी विल राइज। सो इसमें भी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। सो डेंसिटी डिक्रीजेज इन केस ऑफ शॉटकी, बट डेंसिटी रिमेन सेम इन केस ऑफ फ्रैंकल। Conductivity increases, kappa is basically conductivity which increases due to ion movement. Conductivity जो है that also increases in case of Frenkel because there can also occur ion movement since cation has moved into the interstellar site and there's a vacancy created. This vacancy can be used by other ions for movement. Next point is in case of Schottky defect. So ये कब ऑब्जर्व होती है? इट्स ऑब्जर्व्ड व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई, जब आयंस का कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा एंड देयर इज स्मॉल डिफरेंस ऑफ साइज बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। अगर कैटाइन और एनाइन के दरमियान डिफरेंस ऑफ साइज बहुत छोटा होगा, कम होगा डिफरेंस, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई, देन देयर आर हाई चांसेस दैट शॉटकी डिफेक्ट कैन ऑकर इन क्रिस्टल्स, इन आयनिक क्रिस्टल्स। ये कब पाया जाता है? इट्स ऑब्जर्व्ड व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो एंड देयर इज लार्ज difference of size between cation and anion. So there is large difference of size between cation and anion, and coordination number अगर कम होगा आयंस का तब फ्रैंकल वाला डिफेक्ट ज़्यादा पाया जाता है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा, हाई होगा, एंड देयर इज स्मॉल डिफरेंस ऑफ साइज बिटवीन कैटाइन एंड आयन, तब शॉटकी डिफेक्ट जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। सो व्हाट इज द एग्जांपल्स नाउ? इसमें एग्जांपल्स आपके आएंगे in Schottky defect. You have the example that is halides of alkali metals and cesium chloride. They usually go for Schottky defect because उनका साइज ज़्यादा बड़ा है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8:8 है इनका, और इसका फॉर एग्जाम्पल वी हैव NaCl halides, NaCl, we have KCl, we have for example KBr. So these are basically the halides of alkali metals. तो उसमें क्या है, इनका साइज ज़्यादा बड़ा है, so they cannot move into the interstellar site, so rather they can miss from their lattice sites. We call that Schottky defect. Cesium chloride भी ये डिफेक्ट आता है, इन सब में कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6:6, इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 8:8. So high coordination number is there. In case of Frenkel defect, it's usually shown by the halides of silver. For example, AgCl, AgBr, AgI, या जिंक सल्फाइड भी है. तो these are the systems which are usually gone for this kind of because इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4. अगर आप जिंक सल्फाइड में देखेंगे, जिंक का साइज कम है, सल्फाइड का साइज बड़ा है, सिल्वर का साइज बहुत कम है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयरन का साइज बड़ा है, जिसकी वजह से they can occupy interstitial sites, so they can show Frenkel defect. These are the examples of Frenkel defect. And one important point you should note is AgBr जो है सिल्वर ब्रोमाइड जो है, it shows both defects. यहाँ पे भी एग्जाम्पल आएगी सिल्वर ब्रोमाइड की. It shows both Schottky as well as Frenkel defect. So it shows both Schottky as well as Frenkel defect. It shows both Schottky as well as Frenkel defect. That's AgBr. And one more point I should add here, जो Schottky defect है, Schottky defect जो होता है ये ज़्यादातर होता है. There are huge such defects in a crystal, and ये it has been found that 10⁶ Schottky pairs
बनते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्रिस्टल। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब क्रिस्टल में 10⁶ शॉटकी पेयर्स बनते हैं। नॉर्मली क्या होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻22 आयन्स होते हैं। तो ऑब्वियसली जब इतने शॉटकी पेयर्स बनते हैं मतलब 10⁻16 आयन्स ही रह जाते हैं। सो देयर इज 1 शॉटकी डिफेक्ट इन पर, या वी कैन से इन 10⁻6 आयन्स, 10⁻16 आयन्स। तो 10⁻16 शॉटकी पेयर्स बनते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NaCl क्रिस्टल। तो ह्यूज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो है वो बनते हैं इन केस ऑफ शॉटकी डिफेक्ट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। If you find it difficult, you can pause it, you can watch it carefully, you can move forward and backward till you understand it. And please do not forget to make the copy and comment it, like and subscribe. Take good care of yourselves. Thank you very much.